Classes. They have constraints on taxes, accounting, reporting, and
जो भी एंटिटी सेबल होता है, I should consider after tax returns and risk only for asset allocation purpose. Asset allocation purpose के लिए मुझे क्या consider करना चाहिए? After tax, that is 3%, that should be used for asset allocation purpose. Am I clear with this? Dividends and capital gain. 10% of the return is attributed to dividend and capital gain को attributed है 90%. So 10% is you should consider returns and risk on an after-tax basis. That's what the end goal is. So for asset allocation purpose, the returns and risk should be considered on an after-tax basis. Okay, let's move forward now. Adjusting market values for unrealized gains and losses. Adjusting what? Market values for unrealized gains and losses. So now, what are we trying to learn here? So whenever an asset has a cost basis for tax purpose, it differs from its market value. ठीक है, एसेट मैंने खरीदा कितने पे, मेरा कॉस्टिंग क्या था और उसका करंट मार्केट वैल्यू क्या है, वो दोनों हमेशा अलग होते हैं. तो उसके वजह से क्या होता है, फिर एसेट को मैंने डेप्रिशिएट भी किया है और मार्केट वैल्यू उसका अलग रहेगा, कभी ज्यादा रहेगा कभी कम रहेगा. तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें अनरियलाइज्ड गेन होता है और अनरियलाइज्ड लॉस होता है. एग्जिस्टिंग एसेट में क्या होता है, देयर कैन बी अनरियलाइज्ड गेन एंड देयर कैन बी अनरियलाइज्ड लॉस. देयर कैन बी व्हाट, अनरियलाइज्ड गेन और अनरियलाइज्ड लॉस. अगर अनरियलाइज्ड गेन है तो मुझे टैक्सेस भरना पड़ेगा, मेरा लायबिलिटी आ जाएगा टैक्स का. If there is unrealized gain, if there is unrealized gain in my asset, I will have a tax liability. I will have to pay taxes. And if there is unrealized losses, it can lead to savings of taxes. That is called as tax asset. That is called as what? Tax asset. तो ये unrealized gains and losses है अगर आपके asset में. If your asset has unrealized gains and losses, we need to adjust taxes. We need to adjust for those taxes, either a liability or an asset, tax asset or tax liability. We need to adjust that. Okay, and what are the potential ways? What are the different ways of adjusting that? What are the different ways in which the current market value must be adjusted to reflect that tax asset and tax liability? Reflect that tax asset and tax liability. Am I clear with this to everyone? First method is to subtract the value of embedded capital gain tax from the current market value of the asset. ऐसा अज्यूम करो कि हम वो एसेट को अगर आज ही बेच देंगे तो हमको वो एसेट से कितना मिलेगा टैक्स माइनस करने के बाद. So assume करो, if you sell the asset today, how much taxes, how much unrealized gain will be realized? उस पे कितना टैक्सेस भरना पड़ेगा उतना माइनस कर दो. Assuming that the asset is sold off today only. Second method of adjusting for that tax asset and tax liability. How do we do that? Assume करो that the taxes, that the asset will be sold in the future. ऐसा assume करो हम asset को future में sell करेंगे. Okay? Assume करो कि asset को हम future में sell करेंगे. अगर future में sell करेंगे, जो भी capital gain, capital loss आएगा, उसको हम क्या करेंगे, जो tax liability आएगा उसको हम क्या करेंगे, we will discount it to the present value using after tax return as a discount rate. So discount the capital gain tax liability using after tax returns as the discount rate. Am I clear with this to everyone? Am I clear with this to everyone? This is the second method.
And the third method of making that adjustment is discount the capital gains tax liability using risk-free rate as discount rate. तो फर्स्ट मेथड में क्या किया, कैपिटल गेन्स का जो टैक्सेस है उसको इमीडिएटली माइनस कर दिया, अज्यूमिंग दैट द एसेट इज सोल्ड टुडे ओनली. सेकंड थर्ड सिनेरियो में क्या अज्यूम किया, दैट द एसेट विल बी सोल्ड इन द फ्यूचर, भी कैपिटल गेन टैक्सेस आएगा, उसको डिस्काउंट कर दो. सेकंड सिनेरियो में डिस्काउंट करो यूजिंग आफ्टर टैक्स रिटर्न एज अ डिस्काउंट रेट. थर्ड सिनेरियो में डिस्काउंट करो यूजिंग रिस्क फ्री रेट एज द डिस्काउंट रेट. ये खाली एडजस्टमेंट की बात चल रही है यहाँ पर. हाउ डू वी एडजस्ट द मार्केट वैल्यू फॉर अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस? राइट ऑन एवरीवन प्लीज क्विकली. Everyone will write on please quickly. Next, simple example है calculating after tax standard deviation of returns. Standard deviation. After tax basis पे compute करेंगे. A security has an expected pre-tax standard deviation of 12% and is under consideration for purchase by an investor who suffers capital gains tax at a rate of 20%. What is the after-tax standard deviation? Simple है, 12% into 1 minus 20%. That's your after-tax standard deviation. Okay. Next, impact of taxes. Impact of taxes on efficient frontier. Allocations to tax inefficient assets such as high yield bond will usually, agar aap taxes, so let's read this content once again. Impact of taxes on efficient frontier. Okay. अगर आप टैक्सेस कंसिडर नहीं करोगे, अगर आप आफ्टर टैक्स रिटर्न्स और आफ्टर टैक्स रिस्क कंसिडर नहीं करोगे, ओके, सो व्हाट हैपेंस इज जनरली हाई यील्ड बॉन्ड्स में, हाई यील्ड बॉन्ड में टैक्स रेट्स क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है. ओके, हाई यील्ड बॉन्ड में टैक्सेस आर सिग्निफिकेंटली हायर. अगर हम आफ्टर टैक्स रिटर्न्स कंसिडर करेंगे, सो जनरली वी विल नॉट प्रेफर टू इन्वेस्ट इन दीज काइंड ऑफ बॉन्ड्स बिकॉज इसमें रिस्क भी ज्यादा है, ठीक है, और टैक्सेस भी ज्यादा है. बिकॉज हाई यील्ड बॉन्ड है और हाई यील्ड बॉन्ड्स है तो इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा तो मुझे टैक्सेस भी ज्यादा भरने पड़ेंगे. सो अगर मैं वो टैक्सेस कंसिडर करूंगा तो मेरा ये वाले बॉन्ड्स में, ये जो बॉन्ड्स है इनमें एलोकेशन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा. ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. फिर मैं ये एसेट्स को मेरे पोर्टफोलियो में क्यों रखता हूं? Still, why do I keep these assets in my portfolio? What is the reason to keep these assets in my portfolio? The reason is because they provide diversification. Because they provide diversification, because they have low correlation with other assets. So अगर मैं after tax returns, if I consider after tax returns on an after tax basis, and if I also consider the risk on an after tax basis, okay, उसके वजह से generally my allocation to high yield bonds will decrease. Generally my allocation to high yield bonds will decrease. तो फिर भी ये मेरे पोर्टफोलियो में क्या कर रहे होते हैं? The reason to keep them in my portfolio is because they will provide me diversification. How will they provide you diversification? Because they have lower correlation with other asset classes. Taxes ka impact on rebalancing. What is the impact of taxes on
रीबैलेंसिंग। टैक्सेस की वजह से आपका रिटर्न्स क्या हो जाता है? टैक्सेस की वजह से आपका रिटर्न्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन टैक्सेस की वजह से आपका आफ्टर टैक्स रिस्क, आपका फ्लक्चुएशन भी कम हो जाता है, बिकॉज आपका ओवरऑल रिटर्न्स कम हो गया है, तो रिटर्न्स का फ्लक्चुएशन भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। So because of tax, what happens is your risk also decreases. What happens to your risk? Your risk also decreases. खाली returns कम नहीं होते, your risk also decreases. If rebalancing is done frequently, if rebalancing is done what? Frequently, what will happen to realized gains and losses? What will happen to realized gains and losses? They will increase. Obvious answer है। जितना frequently rebalance करोगे, जितना frequently rebalance करोगे, realized gains and losses भी क्या होगा? Realized gains and losses भी क्या होगा? उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। As a result, cost will, रीबैलेंसिंग जितना जल्दी करोगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रेडिंग कॉस्ट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। कंक्लूजन, वोलेटिलिटी डिक्रीजेस। कंक्लूजन क्या है आपका? वोलेटिलिटी, अगर आपका रिस्क कम होता है, आपका रिस्क अगर कम होता है, तो आपका कॉरिडोर विड्थ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यू विल नॉट रीबैलेंस दैट फ्रीक्वेंटली, योर कॉरिडोर विड्थ विल इंक्रीज। क्यों ऐसा है? बिकॉज टैक्सेबल पोर्टफोलियो में, टैक्सेबल पोर्टफोलियो में वोलेटिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वोलेटिलिटी, फ्लक्चुएशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फ्लक्चुएशन कम हो जाएगा तो मुझे रीबैलेंसिंग करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मेरा कॉरिडोर विड्थ क्या हो जाएगा? वाइडर हो जाएगा। सो आफ्टर टैक्स रीबैलेंसिंग रेंज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हाउ कैन वी कंप्यूट आफ्टर टैक्स रीबैलेंस? range. We will discuss that. We will discuss that now. How do we compute rebalancing range on an after-tax basis? Because taxes की वजह से taxes consider करेंगे तो मेरा रिस्क क्या हो जाता है? कम हो जाता है। रिस्क कम हो जाता है अगर, तो मुझे रीबैलेंसिंग की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा कॉरिडोर विड्थ क्या हो जाएगा? माय कॉरिडोर विड्थ फॉर रीबैलेंसिंग विल increase. Let's try to understand this further. Be careful that you do not confuse impact of taxes on after-tax standard deviation with the impact of taxes on allowable after-tax deviation from target weight for an asset class. क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग? What are they trying to say here? They're trying to communicate one simple message here. Taxes का impact standard deviation पे क्या होता है? Taxes की वजह से standard deviation क्या हो जाता है? Because of taxes, what happens to standard deviation? Because of taxes, standard deviation on an after-tax basis, after-tax basis पे standard deviation क्या हो जाता है? कम हो जाता है। Okay, but आपका corridor width क्या हो जाएगा? आपका corridor width क्या हो जाएगा? The width of the corridor will increase. Taxes की वजह से आपका width of the corridor will increase. Please write down everyone this much quickly. Okay, moving forward now. Taxes, they cushion the pre-tax upside and downside of an asset's return. Taxes की वजह से क्या होता है? Upside और downside returns भी क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, उसमें fluctuation कम आता है, and therefore they decrease after-tax standard deviation of the asset. सिंपल पॉइंट है, टैक्सेस की वजह से रिटर्न्स कम हो जाते हैं, तो रिटर्न्स कम हो जाते हैं तो रिटर्न्स का फ्लक्चुएशन भी क्या हो जाता है? ऑन आफ्टर टैक्स बेसिस कम हो जाता है। सो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑन एन आफ्टर टैक्स बेसिस, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ प्री टैक्स बेसिस इनटू 1 माइनस की, बिकॉज टैक्सेस लोअर द रिटर्न वोलेटिलिटी, टैक्सेस की वजह से वोलेटिलिटी कम हो जाता है। वोलेटिलिटी, फ्लक्चुएशन अगर कम हो गया है, तो आप अपना कॉरिडोर विड्थ भी क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो। आप अपना रीबैलेंसिंग करने का कॉरिडोर विड्थ क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो इन कंपैरिजन टू प्री टैक्स डिविएशन। ओके, सो डिविएशन फ्रॉम टारगेट वेट is equal to deviation from target weight on pre-tax basis divided by 1 minus t. यहाँ पर डिवाइड करेंगे बिकॉज मुझे कॉरिडोर विड्थ बढ़ाना है। कम करना होता तो हम 1 minus t से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर जैसे हमने क्या किया, स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई किया,
आफ्टर टैक्स बेसिस पे स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने के लिए, आफ्टर टैक्स बेसिस पे स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, प्री टैक्स स्टैंडर्ड डिविएशन को मल्टीप्लाई किया 1 माइनस टी से, बिकॉज स्टैंडर्ड डिविएशन आफ्टर टैक्स बेसिस पे कम होगा तो मल्टीप्लाई करना है। अगर मुझे आफ्टर टैक्स में कैलकुलेशन में कम करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर बढ़ाना है तो डिवाइड करेंगे विथ 1 माइनस टी, we'll divide it with 1 minus t. So deviation from target weight will be after tax basis pay. Deviation from target weight on an after tax basis will be deviation from target weight on a before tax basis, pre-tax basis. Divide by 1 minus t. Divide by 1 minus t. Let's take a look at an example. You will get more clarity on this. Everyone read this example and then we will discuss. Moving forward now. A tax-exempt investor's strategic asset allocation calls for 40% investment in fixed income, plus and minus 5% for a range of 35 to 45%. If fixed income returns are subject to 30% tax rate, calculate the equivalent after-tax rebalancing range. Okay. Pre-tax allowable deviation from target weight was 5% before tax and minus 5 after tax basis पे हमको आ रहा है, that will give me an answer of, that is giving me an answer of 7.14%. तो मेरा अभी कॉरिडोर विड्थ, वेट्स का कॉरिडोर विड्थ कितना हो जाएगा? आई कैन फ्लक्चुएट फ्रॉम 32.86 to 47.14%. आई होप आई एम क्लियर विद दिस. 30% से डिवाइड कर दिया बिकॉज मुझे वेट बढ़ाना था. क्यों बढ़ाना था? बिकॉज मेरा टैक्स रिस्क. Am I clear with this? Moving forward now. What are the strategies? What are the strategies to reduce? What are the strategies to reduce the impact of taxation? Let's move forward now. Strategies that can be employed to reduce the impact of taxes. Taxes का impact reduce करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? One is called as tax loss harvesting. The other one is called as strategic asset allocation or strategic asset location. What do you mean by tax loss harvesting? जानबूझ के losses को realize करो, जानबूझकर losses को क्या करो? Realize करो, ताकि आप अपना gains जो है उसको offset कर पाओ और taxes कम हो. Realize the losses to offset the gains. Strategic asset location. अपने asset को strategic तरीके से locate करो. Place assets in proper location. Now, what do you mean by that? आपको अपना asset कौन से account में place करना है वो आप decide कर सकते हो. You can decide on that. Where do you want to place your asset? You can place it in tax deferred account, or you can also place it in tax exempt or tax advantage accounts. Let's try to understand what do you mean by tax exempt account, what do you mean by tax deferred account. पर इतना लिखेंगे सब लोग. How to reduce the impact of taxes. Two strategies: tax loss harvesting and strategic asset location. Moving forward now. Pre-tax versus after-tax deviation from target allocation weight. If you place an asset in tax deferred account, the risk and returns should be considered on an after-tax basis or before-tax basis. आपने अपना पैसा अगर टैक्स डेफर्ड अकाउंट में रखा है, रिस्क एंड रिटर्न्स शुड बी कंसिडर्ड ऑन, टैक्स डेफर होगा उसमें, तो रिस्क एंड रिटर्न शुड बी कंसिडर्ड ऑन बिफोर टैक्स बेसिस. इफ यू प्लेस एन एसेट इन टैक्सेबल अकाउंट, अगर आप अपना पैसा टैक्सेबल अकाउंट में प्लेस करोगे, then you have to consider risk and returns on an after tax basis. Now, what do you mean by tax deferred account? Let's go to the previous slide. What do you mean by tax deferred account? आप ये अकाउंट में अपना पैसा अगर प्लेस करोगे
और आपको अगर अकाउंट में पैसा रिटर्न आ रहा है तो आप उसको टैक्स फ्री ग्रो कर सकते हो। टैक्स डेफर्ड अकाउंट में क्या होगा, योर मनी विल कीप ऑन ग्रोइंग, यू डोंट हैव टू पे ऑन एनी टैक्सेस। पर आपको टैक्सेस कब भरने पड़ेंगे, जब आप पैसा उस अकाउंट से बाहर निकालोगे तो आपका टैक्सेस आपको इमीडिएटली बर्डन नहीं आएगा। द बर्डन विल कम ओनली व्हेन यू रिमूव मनी फ्रॉम दैट अकाउंट। दैट्स कॉल्ड एज अ टैक्स डेफर्ड अकाउंट। और टैक्स एग्जेम्प्ट अकाउंट क्या होता है? व्हाट इज अ टैक्स एग्जेम्प्ट अकाउंट? टैक्स एग्जेम्प्ट अकाउंट इज एन अकाउंट इन व्हिच यू डोंट हैव टू पे टैक्सेस एट ऑल। जब मनी ग्रो करेगा तभी भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, जब पैसा निकालोगे तभी भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। और डेफर्ड अकाउंट में क्या होगा, पैसा जब ग्रो हो रहा है, रिटर्न आ रहे हैं, तभी भरने की जरूरत नहीं है इमीडिएटली। कब भरने की जरूरत है, जब आप उसको उस अकाउंट से निकाल लोगे। एट दैट टाइम यू विल हैव टू पे टैक्सेस। एम आई क्लियर विद द डिफरेंस बिटवीन द टू? सब लोग पहले लिखेंगे डिफरेंस इसका, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। राइट डाउन एवरीवन प्लीज द डिफरेंस। I will repeat the difference between tax deferred account and tax exempt account once again. Tax deferred account में आपने जो पैसा प्लेस किया है, it can grow. You can get the returns and you don't have to pay any taxes whenever you get the returns. But the moment you remove money from that account, you will have to pay taxes. That is called as tax deferred account. Tax exempt account क्या होता है? What is a tax exempt account? कभी भी आपको पैसा भरने की, टैक्सेस भरने की जरूरत नहीं है। जब पैसा ग्रो हो रहा है तभी भी नहीं, और जब निकालोगे तभी भी नहीं। Now, tax exempt and taxable account. If you place an asset in tax deferred account, tax exempt account, risk and return should be considered on before tax basis. But if you place an asset in a taxable account, it should be considered on after tax basis. Important point, we already covered this. Next, where should you place assets which have lower taxes? जिस पे टैक्स रेट्स कम होता है, जिस पे टैक्सेस कम भरने हैं, वो एसेट्स को आप कहां पर प्लेस करोगे? Where will you place those assets? Very good, everyone. You will place those assets to have assets that have higher taxes. Taxable account, tax. Taking a break. I'll just use the washroom and come. I think I'll also grab a jacket or something, feeling a bit cold. It's weird, the temperature here is sometimes so hot, sometimes so cold. I was literally using the fan this morning. So, yeah, let's see. I think maybe I can use this as my journal. I'm not so sure the fact that it's going public. There may be a time when someone might watch it. I know right now no one is watching, and I'm not so sure if anyone will even watch it or not. But still, I haven't told my parents yet, but I have an interview tomorrow. It's for a company. I don't know how I'll go. I'm a bit nervous. I think I don't want to prepare myself too much. I don't want to work on it too much. But still, I'm not so sure how will it go. So let's see. I am really not sure about what I want to do with my life. There are so many people giving so many suggestions at this point. Yeah, it's a bit confusing. Some people want me to join the family business. Some people want me to, you know, just look for a job and work there. I'm working to get one. I don't know. I don't know what is the right thing to do. I just hope that there is a guiding light, which can help me choose the right path. I kind of miss talking to her.
especially in movies like this, because I think she has helped me a lot in so many decisions of my life. She just calms me down. It's like I have stopped talking to people. She was the only one whom I used to talk to about so many things going on in my mind, my life. And suddenly it just feels now when I'm talking to myself here in front of this camera. I think it was supposed to be, but still not having someone to talk to. It's weird. Yeah, break. I think I'll just go and smoke a cigarette. I think I really need it at this point. Watch a bit of Modern Family to relax my mind. Till then, I don't know if I should leave this open or go. I think I should because it will motivate me to come back again and just keep studying as soon as instead of watching Modern Family. I'll just come in a jiffy, guys. See you. I can't find my cigarette box. कहाँ होगा भाई? Fuck, 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 fuck.
Yeah, I'm back. Let's get back to studying.
Okay. So now in this particular section of asset allocation, समझ में आ रहा है? Company में इन्वेस्टमेंट करने वाला इंसान चेंज हो गया, तो बोलते चेंज इन बिलीफ, स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन चेंज करना पड़ेगा, इन्वेस्टर के गोल्स चेंज हो गए हैं, तो भी हमको SAA एडजस्ट करना पड़ेगा. Am I clear with this? So these are 2-3 scenarios when you need to adjust your strategic asset allocation. Whenever there is change in goals, change in constraints, and change in beliefs. Am I clear with this? Now, asset allocation can be of two types. Strategic asset allocation, जो आपके IPS में मेंशन होता है. IPS में मेंशन होता है कि आप अपना लॉन्ग टर्म में एसेट एलोकेशन कैसा रखोगे, 20% debt, 60% equity, whatever it is. That is called as strategic asset allocation. But there could be opportunities in the market. There could be what? Opportunities in the market. And you would like to capitalize on those short-term opportunities, and you would deviate, you might deviate from SAA. That is called as tactical asset allocation. So long-term asset allocation to meet the goals of the client is known as strategic asset allocation. And if you deviate from SAA to capitalize on short-term opportunities in the market, that is known as what? Tactical asset allocation, to take advantage of perceived mispricing in the market. Write down everyone, please, quickly. Next, tactical asset allocation. What is the objective of doing tactical asset allocation? Everyone knows short-term में opportunities आया है, मुझे miss नहीं करना है वो. The goal is to increase, the objective is to increase risk-adjusted return on a short-term basis. You will take into consideration the risk consideration. You will take into consideration the risk constraint, but not specific goal or liability. आप उसका risk constraint देखोगे, और उसके objectives और goals को नहीं देखोगे, because आपका agenda क्या है? Returns बढ़ाना risk के अंदर रहते. Returns बढ़ाना risk के अंदर रहते. Market में opportunity आया है, I would not want to miss that opportunity. TAA के constraints क्या होंगे? TAA का success should be judged against the benchmark of the SAA. Whether आपका TAA successful हुआ है या नहीं हुआ है, वो हम judge कैसे करेंगे? How are we going to judge that? How are we going to judge that whether TAA has been successful or not successful? We will compare it to the benchmark of the SAA, and then we will discuss whether TAA was successful or not successful. Evaluation. There are many methods of measuring the success of TAA decision. First method is compare the Sharpe ratio under TAA and SAA. TAA में आपका Sharpe ratio कितना था, SAA में Sharpe ratio कितना था. Sharpe ratio TAA में क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए. Sharpe ratio TAA में क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए. The goal is to increase your risk-adjusted return. The second method is to compute information ratio. Compute what? Information ratio IR, active returns upon active risk, and compare it with SAA.
Compare realized risk and returns of TA with SAA portfolio. Am I clear with this? So these are different ways of evaluating whether your TA was successful or not successful. TAA के drawbacks क्या हो सकते हैं? What can be the drawbacks of TAA? TAA में आपका churning बढ़ जाता है, portfolio turnover बढ़ जाता है, जिसकी वजह से trading cost क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे. You might take concentration risk. The portfolio might not be diversified. आपका portfolio diversification कम हो जाता है, concentration risk बढ़ जाता है, and diversification benefits are lower when you do TAA. I hope I am clear with this. Everyone note it down please quickly. Approaches to tactical asset allocation. What are the different approaches to tactical asset allocation? Now, it can be discretionary tactical asset allocation. It relies on what? Qualitative interpretation of macroeconomic variables. ये completely manager के skill के ऊपर dependent है. Discretionary tactical asset allocation is completely dependent on the skill of the manager. इसमें qualitative interpretation ज्यादा है macroeconomic variables का, quantitative interpretation कम है. It may use macroeconomic data, fundamental data, market sentiment. इसको किसको यूज करेगा? डिस्क्रेशनरी है तो मार्केट डेटा यूज करेगा, फंडामेंटल डेटा यूज करेगा, सेंटीमेंट यूज करेगा. यू गोइंग टू मेक यूज ऑफ दीस डेटा पॉइंट्स. व्हाट इज मैक्रोइकोनॉमिक डेटा? It focuses on bond yields, credit spreads, GDP, unemployment, monetary policy, fiscal policy. Fundamental data. Then when they talk about fundamental data, it will look at company ka P multiple, deviation in price to book multiple, dividend yield. And when you talk about market sentiment, you will look at margin borrowing, short interest ratio, volatility indices. So these indicators will give you an idea about the market sentiment. On the other hand, there can be another approach to tactical asset allocation, which is more of a systematic approach. Systematic approach मतलब आप quantitative skills ज़्यादा use करोगे. Regression, time series analysis, cross-section analysis, time series regression, multiple linear regression. Quantitative skills ज़्यादा use करो यहाँ पर आप. That's called as a systematic approach. Two factors that we use here are value approach and momentum approach. Everyone knows what is a value approach. The goal is to earn excess returns of value stocks over growth stocks. The aim is to exploit excess returns of value stocks over growth stocks because everyone knows returns of the value stock is greater than the growth stock. And then momentum, it focuses on identifying the stocks which are in high momentum. It focuses on identifying the stocks which are in high momentum. Momentum strategy बोलते हैं उसको. Write it down everyone please quickly. I think I'll have to end this stream. My laptop is getting heated up. The battery is getting discharged and it's quite unusual heating. I think I have to look for proper system, so that I can stream nicely. Thank you guys.